सो कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक ओपन लूप सिस्टम है और एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है. ओपन लूप, इफ यू रिमेंबर सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स, so yeah, DSP course, so open loop is basically a feed forward system and closed loop is basically a feed back system. ओपन लूप एक FIR सिस्टम है, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम, और क्लोज्ड लूप जो है वो एक इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम है. ओपन लूप इज डिफाइंड बाय द जीरोस, ऑल जीरो मॉडल जिसे हम कहते हैं. क्लोज्ड लूप इज बेसिकली ऑल पोल और आर्मा मॉडल. आर्मा मॉडल मीन्स ऑटो रिग्रेसिव मूविंग एवरेज मॉडल. सो बेसिकली आप जहाँ पर आपके पास सिर्फ जीरोज आते थे सिस्टम में, वो ओपन लूप सिस्टम था. जहाँ पर जीरोज और पोल्स दोनों आते थे, आपके जो एस प्लेन है या जो जी प्लेन है उसमें स्कैटर्ड होते थे, तो वो क्लोज लूप सिस्टम था. और जहाँ पर पोल्स जो थे वो सारे के सारे ओरिजिन पे होते थे या इन्फिनिटी पे होते थे, और आपका जो एस प्लेन था या जो जी प्लेन था उसमें जो जीरोज थे वो स्कैटर्ड होते थे, तो वो जो था वो ओपन लूप सिस्टम था. Here basically we are talking about the different aspects of open loop system. Open loop system, as I said before, it is a feed forward system. It does not have any feedback. What do we mean by that? Okay, there is an input. The input is given to the process in a controlled manner, but there is no check on the output. For example, let's take the example of a traffic light system. Traffic light system में नॉर्मली क्या होता है कि एक टाइमर सेट होता है. एक टाइमर सेट होता है, वो टाइमर जो है पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए या 20 सेकेंड्स के लिए या whatever. For a few seconds it will give you red light, then for a few seconds it will give you green light. It does not consider the intensity of the traffic, कि भाई कौन से रोड्स पे ज्यादा डेंसिटी है, कौन से रोड पे नहीं. So it is just, what is the input in this case? The timer. The timer is basically the input to the traffic lights, and the traffic light is not considering कि भाई रोड्स पे कितना ट्रैफिक है, कौन सी जो साइड है उस पे ज्यादा ट्रैफिक है, उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, जिस साइड पे कम ट्रैफिक है उस साइड को कम ट्रैफिक देना चाहिए, कम टाइम देना चाहिए. So the timer is not adjusted according to the traffic. So there is no feedback. It's just like one timer is set और फिर वो वही टाइमर चलता रहता है, is trying to control the traffic. So that system is a feed forward system. It does not consider the traffic, the intensity of the traffic, and that's why it's just working on the timer itself. It's not taking the feedback from the traffic, so from the density, or considering the density of the traffic. So that's why such a system is known as a feed forward system or a open loop system. Open loop system में क्या होती है, इनपुट होता है, आगे जो है आपका कंट्रोलर सेटअप होता है और आगे आपका प्रोसेस होता है. You get the output. But what is happening at the output end? It is never considered. There is no feedback. On the other side, we have a closed loop system. A closed loop system is a system जिसमें आपके पास feedback आ रही होती है. So basically, there is an input, कंट्रोलर को दी जाती है, सिस्टम स्टार्ट होता है, और फिर सिस्टम जो जनरेट करता है आउटपुट, वो आउटपुट जो है इट कम्स बैक to the controller. So the controller is basically measuring the input and it is looking at the output and it is basically adjusting the input according to the output. Now let's go to the traffic light system again. लेट्स से कि हम लोगों ने क्या किया, ट्रैफिक लाइट सिस्टम के साथ हमने ऊपर कैमराज ऐड कर दिए, और वो जो कैमराज हैं बेसिकली उसमें हमारे पास हमने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोगों ने एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो बेसिकली ट्रैफिक डेंसिटी देखता है कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं कौन सी साइड पे. जिस साइड पे ज्यादा ट्रैफिक होती है इट अलॉट्स मोर टाइम to that side, so traffic light is more green on that side and the timer duration of the green signal is more जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, और जहां पर डेंसिटी कम होती है वहां पर रेड लाइट ऑफ कोर्स ज्यादा होगी. सो यू आर बेसिकली अडेप्टिंग द timer's control according to the feedback that you are getting from the camera sensors based on the density of the traffic. Now such a system is called a feedback system जिसमें you are, what was the input? The input was a timer. You are adjusting the timer based on the density of the traffic on the roads. So such a system is known as a feedback system, which is more efficient of course, but
it uses more hardware, it is more intelligent, but it is more costly as well. So these are the things that you have to consider, of course. Interesting example of a dryer, because why are we talking about a washing machine or dryer here? It's just because it's something we all use in daily life. Even the male community use it, the female community use it, and so let's see, agar, how does a dryer works in case it is an open loop system, and in case it's a closed loop system, and what is the problems that we see in an open loop system, what are the advantages of closed loop system, but then what is the price that we are paying for a closed loop system. So over here, I hope you're running the presentation, and if you see right now, we're looking at the first diagram where we are talking about the input as a feed forward system. So basically there's a time, so how does dryer work? ड्रायर जो होता है उसकी जो टाइम के मुताबिक देयर इज अ टेम्परेचर सेटिंग, ठीक है. सो वो हॉट एयर ब्लो इन करता है और इट ऑल्सो स्पिन्स द क्लोथ्स, और विद दैट इट blows in hot air, or it tries to dry the clothes. So what is the input? Input जो होती है वो टाइम ड्यूरेशन होती है जो टाइमर आप सेट करते हैं, ठीक है. और ऑफ कोर्स इसके साथ साथ इन ऑर्डर जब भी आप टाइमर सेट करेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टार्ट द मशीन, तो एक इग्निशन होती है फॉर द हॉट एयर टू फ्लो इन. देयर इज एन इग्निशन सिस्टम एट द बैक ऑफ द ड्रायर. सो दीज आर द टू इनपुट्स. देन the heating elements, they are basically वो जो hot air होती है, that is your the hot air and spinning of the clothes, that is your system process. और फिर आपके पास जो होते हैं clothes होते हैं, और वो actually what is your objective कि actual dryness कितनी है. So input जो है वो क्या है? Input is ignition of the heater at the back of the dryer, the time duration, and then what is the output कि actually कपड़े कितने dry हो गए हैं. And the whole process is basically based on timer, clothes and the heating elements. अच्छा जी. Now let's take an example कि हम लोगों ने भाई टाइमर रख दिया कि 20 मिनट में ये कपड़े ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, और हमने 20 मिनट के लिए टाइमर ऑन कर दिया, पीछे से इग्निशन होगी, ऑटोमेटिकली स्टार्ट का बटन हमने प्रेस किया, इग्निशन स्टार्ट होगी, और जी हीटर जो है वो ऑन हो गया, और वो स्पिनिंग भी हो रही है आपकी मशीन की, और साथ साथ जो है वो हॉट एयर ब्लो इन हो रही है और कपड़े ड्राई हो रहे हैं. अच्छा जी, अब हमारा जी गैस है कि 20 मिनट में कपड़े ड्राई हो जाएंगे. सो दिस इज आवर गैस. फर्स्ट थिंग, दिस इज, इट माइट बी कि वो 10 मिनट में जो है कपड़े ड्राई हो जाते हैं, इट माइट बी कि वो आधे घंटे में कपड़े ड्राई हो जाते हैं, वी डोंट नो. हमारा गैस है कि जी 20 मिनट में हो जाएंगे, पहली बात. सो इट्स अ गैस. सो एक्चुअल आउटपुट को अटेन करने के लिए या तो वो अगर वो 10 मिनट में हो रहे हैं, सो वी आर पेइंग अ प्राइस, हम इन एफिशिएंट सिस्टम को यूज कर रहे हैं. और अगर 20 मिनट में हो गए तो जी हमारा तो का हिट हो गया. लेकिन अगर 20 मिनट के बाद भी वो ड्राई ना हुए तो हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को effectively, efficiently achieve नहीं कर पा रहे. In short, so this is a feed forward system, and in feed forward system क्योंकि हम output, हम dryness check नहीं कर रहे कपड़ों की, these are certain problems. अच्छा, इसके साथ साथ अब एक और चीज जो है वो ये कि लेट्स से स्टेप नंबर 2 में अगर आप देखिए, अगर आप क्लिक करें अपनी प्रेजेंटेशन को, you'll see the next diagram जिसमें एक्चुअली डिस्टर्बेंस आ गई है. डिस्टर्बेंस क्या आ गई जी? हम लोग बीच में चेक कर रहे थे कि जी हम फीडबैक लेना चाह रहे थे, हम देख रहे थे कपड़े ड्राई हुए या नहीं ड्राई हुए, या फॉर एग्जांपल एक आध टावल आपका रह गया और अब आप वो भी रखना चाह रहे हैं ड्रायर में, तो आपने ड्रायर का दरवाजा खोला ना, दैट ड्रायर का जो आपने दरवाजा खोला, टेम्परेचर चेंज हो गया है जी. किसका टेम्परेचर चेंज हुआ? अंदर ड्रायर का टेम्परेचर चेंज हो गया. अब ड्रायर उतना गर्म नहीं रहा दरवाजा खोलने से, और जितनी देर आपका दरवाजा खुला रहेगा अंदर जो है टेम्परेचर ऑफ कोर्स डिक्रीज हो रहा है, स्पिनिंग भी बंद हो गई है. दिस इज द डिस्टर्बेंस. आपने दोबारा से दरवाजा बंद किया, सिस्टम चलने लग गया जी, ठीक है जी, और वो ड्राई कर रहा है कपड़ों को. बट दिस डिस्टर्बेंस, आपने टाइमर पहले कितने सेकंड्स कितने मिनट्स का लगाया था? 20 मिनट का. अभी भी वही 20 मिनट पे काउंटर लगाया है और वही जो है टाइम कंटिन्यू हो रहा है. आपने एक एडिशनल क्लोज डाले, या अगर आपने एडिशनल क्लोज नहीं भी डाले, आपने दरवाजा खोला, टेम्परेचर चेंज हो गया, अब वो 20 मिनट में जितने कपड़े ड्राई होने थे अब उतने नहीं ड्राई हो पाएंगे. सो दिस इज अ डिस्टर्बेंस. और आपका सिस्टम फीड फॉरवर्ड सिर्फ टाइमर बेस्ड है,
जैसे वो ट्रैफिक लाइट वाली मैंने एग्जांपल दी थी कि वो जी ट्रैफिक को नहीं देख रहा था, बस उसने जो टाइमर लगाया था वो था। इसी तरीके से यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है, बस आपने टाइमर लगाया हुआ है, वेदर इट्स गेटिंग ड्राइड और वेदर इट्स कितनी अमाउंट की ड्राइनेस आ रही है, यू डोंट नो, इट्स जस्ट अ फीड फॉरवर्ड सिस्टम. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ड्रायर सिस्टम. So over here, I hope you're running the presentation. And if you see right now, we're looking at the first diagram where we are talking. So all these main points I've already discussed them. That is, there is no comparison between the actual and the desired values. Then in open loop, you're not checking the output, so there is no self-regulation. खुद को correction का कोई तरीका नहीं है जी. और फिर इसके बाद हमारे पास each input setting determines a fixed operating position for the controller. Like there is no adaptation according to the output. So that's a problem. And of course you cannot handle runtime changes or disturbances because there is no adaptation. Simple. So these are the same main drawbacks of open loop systems. Let's talk about the same dryer system. Machine का जो dryer system होता है, washing machine का. We're talking about the same system, but this time we are putting a temperature sensor, and the temperature sensor is basically giving input to the controller. So the controller will be comparing the input as well as it will sense the temperature of the machine. And there can also be a humidity sensor which can actually check the amount of wetness of the clothes. So there are two sensors that are giving feedback to the controller, and the controller and what is the input? So the input will, rather than a timer this time, the input will be the level of dryness that we want from the for the clothes. And then of course the ignition of the heater will always be there. So let's say we place the clothes inside the inside the dryer. We set a dryness level for the clothes, and then we push the start button, the ignition starts, the whole system starts. Okay, now the heater is working, now the clothes are spinning, same process, but now the controller is getting a continuous input from the temperature sensor as well as the humidity sensor, and it is basically analyzing the dryness level of the clothes with the desired input that we said. So now the actual dryness. Now in this case, if you open the door, the temperature will change. The temperature sensor will tell the controller, and the controller will then increase the temperature level, or it will increase the duration of the time of the spinning and the spinning of the clothes as well as the heater timing, and so it will try to achieve the actual dryness level with the help of the sensors in a much more effective manner. So this is a closed loop system where you're getting the feedback using the sensors for understanding or for evaluating the actual output. Let's compare the two methodologies now, the open loop systems and the closed loop systems. So let's talk about stability first, because we are taking a feedback from sensors. So the closed loop system is more robust, yes, but again, is it stable or is it not stable? It really depends. क्योंकि जब भी आपके पास क्लोज लूप सिस्टम आता है, फीडबैक आता है, तो पोल्स आते हैं, और पोल्स जो हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. एक फीड फॉरवर्ड सिस्टम इज अ वेरी सिंपल सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इट इज़ ऑलवेज स्टेबल. आपने इनपुट दी, आउटपुट जनरेट हुई, आउटपुट दोबारा से आके कोई चेंज नहीं ला रही. अगर आउटपुट का चेंज बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आपकी वॉशिंग मशीन का हाई होने लग गया, और आपने जो है वो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की प्रॉपर सेटिंग नहीं की हुई, तो इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम. सो द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इट रियली डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड योर कंट्रोलर इज. बट इन ओपन लूप सिस्टम जी एक प्रॉपर टाइमिंग सेट है, उसमें एक प्रॉपर टेम्परेचर चल रहा है, दरवाजा खुला या बंद हुआ वो तो नहीं हैंडल हुआ, इट इज नॉट रोबस्ट, बट देन इट डज नॉट हैव ऑटो increase of the temperature system, and that's why it is more stable. Memory.
अच्छा जी, मेमोरी क्या होती है? जब आप फीडबैक ले रहे होते हैं तो आप प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अब चूंकि फीड फॉरवर्ड सिस्टम में जो ओपन लूप सिस्टम होता है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम, उसमें कोई आउटपुट को रीड नहीं किया जा रहा, आउटपुट को दोबारा नहीं ले रहा, आप इनपुट लिया और बस उसी इनपुट पर चलते जा रहे हैं आप, और जो इनपुट आ रही है उसके मुताबिक आपका काम चल रहा है। सो इट इज अ मेमोरी लेस सिस्टम। जबकि a closed loop system, it always requires the previous state, and because it requires the previous state of the output, it always requires memory. Robustness to external disturbances, ये already मैं explain कर चुकी हूँ कि open loop systems are not robust to external disturbances, but closed loop systems are always robust to external interferences. Let's move to the next topic, that is what kind of inputs do we have? We discussed the systems, yes. We discussed the control of the system in a limited manner, yes. What are open loop systems or closed loop systems? Yes, we discussed. Now let's discuss the input, कि हमारे पास input किस किस्म की हो सकती है. These inputs, I think these all you have already studied in signal and system, of course, but let's revise them. Input can be an impulse. जैसे कि इग्निशन सिस्टम्स में इट इज नॉर्मली एन इम्पल्स, कि जी स्टार्टिंग ऑफ द हीटर जो होता है देयर इज एन इग्निशन और दैट इज एन इम्पल्स, और उसके बाद वो इग्निशन बंद हो जाती है और हीटर चलता रहता है. देयर कैन बी अ कॉन्टिन्यूस स्टेप रिस्पॉन्स, जैसे कि आप कॉन्टिन्यूस वोल्टेज फैन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो दैट इज अ स्टेप रिस्पॉन्स. जैसे आप लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं किसी चीज़ को, जिस चीज़ को आप स्विच ऑन करते हैं, इट्स अ स्टेप. अच्छा जी, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वोल्टेज आपको मिल रही होती है. देन देयर इज अ रैंप फंक्शन. रैंप फंक्शन मीन्स के विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो इनपुट है वो इंक्रीज हो जा रहा होता है, इनपुट इंक्रीज हो जा रहा होता है. सो दैट इज अ रैंप फंक्शन. Then you can have a sinusoidal system or a parabola system. Parabola system means कि initially जैसे कि एक PN junction होता है, initially the resistance is very high, current flow जो current flow होता है वो minimum होता है, but then the resistance it decreases and the current flow is maximum. Or you can have a sinusoidal जिसमें आप थोड़ी थोड़ी बाद जो है pulsating kind of input दे रहे होते हैं. You're giving the input, then you're stopping it, then you're giving it, then you're stopping it, then you're, so that's kind of a pulsating input. These are the different kind of inputs that we can have. We will discuss all this in the coming lecture, inshallah, in more detail. So I hope the main points that you're taking from this lecture are basically what is a system, what is a signal, what are control systems, what is a plant, what is a controller, what is a sensor, and what is the difference between feed forward or feedback system, or what is an open loop system or a closed loop system. These are the basic things that we are discussing right now. I hope these go with you, and be very vigilant about these points, because ye sare points jo hain, these will go on in the upcoming lectures. Thank you so much. Have a good day.